Here we're going to talk about MTF. We're going to tell you about the product. We're going to show you a demo on how to place an order in MTF, and any question and answers is what we will take up later at the end of the session. Now we have here with us Nirmit Shah, who leads the growth force into HDFC Securities, HDFC Sky. And he will take you through the entire session of learning MTF, what is MTF, how do you place orders, and and so on. So over to you, Nirmit. Thank you. Thank you, Sharmila. Right. So, good morning, everyone. First, let's understand what is MTF. Okay, so MTF is basically a margin trading facility. Okay, before deep dive into the what is the margin trading facility, let's understand what kind of orders, कौन से segments में order होते हैं और किस type के order होते हैं और वो order करने के लिए what is the required margin. Okay, so I was segmentized into the three kind of segment. One is a cash, one is a MTF, and one is a FNO. ओके, तो जब भी आप ट्रेड करते हो तो इन कैश देयर आर टू ऑप्शन, वन इज अ डिलीवरी, सेकंड इज अ इंट्राडे. चाहे आप डिलीवरी में ऑर्डर करोगे या आप इंट्राडे में ऑर्डर करोगे. ओके, तो इफ यू आर वांट टू प्लेस अ ऑर्डर इनटू द डिलीवरी, यानी आप कोई भी शेयर्स लेना चाहते हो फॉर वेदर इट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, बराबर है, तो यू हैव टू पे द फुल फंड. ओके, तो आपको पूरा का पूरा कैश फंड देना पड़ेगा टू परचेज दैट डिलीवरी. सेम वे अगर आपको इंट्राडे करना है, विच इज आपने मॉर्निंग में लिया और बिफोर 3:30 इफ यू वांट टू स्क्वायर अप द पोजीशन, ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज ए इंट्राडे. तो इंट्राडे करने के लिए तो करंटली मार्जिन रिक्वायर्ड होता है आइदर कैश या आप अपने शेयर भी प्लेज कर सकते हैं. तो देयर आर बोथ द ऑप्शन इज अवेलेबल. चाहे आपके अकाउंट में कैश पड़ा हो या आप कोई भी शेयर आपका पुराना पड़ा हुआ है डिलीवरी का, वो आप शेयर प्लेज करके भी ऑर्डर कर सकते हो. सेकंड ऑप्शन इज MTF. ओके, तो सेम वे कैश में भी देयर इज अ डिलीवरी, MTF में भी आप डिलीवरी ट्रेड कर सकते हो वेदर इट्स फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. ओके, बट MTF में ट्रेड करने के लिए देयर आर बोथ द ऑप्शन इज अवेलेबल. आइदर आप अपने कैश फंड रख के भी ट्रेड कर सकते हो, एंड सेकंड ऑप्शन यू कैन प्लेज योर एग्जिस्टिंग शेयर्स. अगर आपके डीमैट अकाउंट में जो भी शेयर पड़ा है वो आप प्लेज करके भी लिमिट ले सकते हो. और तो फॉर MTF डिलीवरी देयर आर बोथ द ऑप्शन विच इज अ कैश as well as the pledge. You can pledge your share and then after you can purchase the share into the MTF delivery. For futures and options, now futures options को मैंने ऑर्डर तीन टाइप में ब्रेकअप किया है. वन इज अ फ्यूचर्स, पर तो चाहे आप फ्यूचर बाय करो या सेल करो, फॉर दैट द मार्जिन इज रिक्वायर्ड. ओके, तो इसके लिए आइदर आप कैश या आपका प्लेज किया हुआ शेयर दोनों कंसीडर होगा फॉर योर मार्जिन. फॉर ऑप्शंस बाइंग, ओके, तो अगर आपको ऑप्शंस कोई भी बाय करना है, फॉर दैट यू हैव टू कीप 100% कैश. तो अगर आपको कोई भी लेट से निफ्टी का 23,000 का कॉय बाय करना है विच इज द लेट से प्रीमियम इज 100 रुपीज एंड 75 का लॉट, तो यू हैव टू कीप 7,500 इन योर बैंक, इन योर ट्रेडिंग लेजर. तो ही आप कर सकते हो. तो फॉर ऑप्शंस बाय यू हैव टू कीप कैश बैलेंस. And for option selling, again option selling is a kind of futures kind of trade which is for that the margin is required. तो इसके लिए भी इधर आपका कैश फंड भी चलेगा या आपके प्लेज किए हुए शेयर्स भी चलेंगे. So overall the summary of the slide. So for the delivery trade into the cash segment, you have to keep 100% cash balance in your ledger, and for options buy you have to keep 100% cash balance in your trading ledger. Okay, rest for all the types of order, either you can place the order via cash or you can pledge your shares. Now what is the pledge that we will discuss in the upcoming slides. But before that, now what is the MTF? Okay, so MTF is a basically margin trading facility. So basically it's a leverage product. ओके, तो अगर आज के दिन में लेट से जैसे मैंने आगे की स्लाइड में बताया कि इफ यू वांट टू बाय अ डिलीवरी, अगर आपको कोई भी डिलीवरी ऑफ स्टॉक्स लेना है तो यू हैव टू कीप 100% कैश बैलेंस. ओके, तो ये केस में अगर मेरे को 4 लाख का लेट से स्टॉक लेना है तो आई हैव टू कीप 100% कैश, विच इज 4 लाख का बैलेंस मेरे को ट्रेडिंग लेजर में रखना पड़ेगा, तभी जाके मैं 4 लाख का स्टॉक्स ले सकता हूँ. बट इफ यू वांट टू प्लेस द सेम ऑर्डर इनटू द MTF, देन मेरे को ट्रेडिंग लेजर में ओनली 1 लाख रुपए रखना है. लेट्स अनदर 3 लाख विल बी फंडेड बाय द HDFC सिक्योरिटीज. नाउ जो ये 1 लाख रखना है, वेदर इट कैन बी द कैश ऑल्सो और आई कैन ऑल्सो प्लेज माई एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑल्सो विच आर अवेलेबल इन टू द currently in my demat account.
So for this 1 lakh also, okay, so this is a 1 lakh is a margin. Margin can be either via cash or a pledge of your share. तो यही 1 लाख के सामने मैं 4 लाख का स्टॉक ले सकता हूं. तो दिस 3 लाख विल बी फंडेड बाय द एचडीएफसी सिक्योरिटीज. ओके, तो एचडीएफसी सिक्योरिटी ये 3 लाख पे मेरे को इंटरेस्ट चार्ज करेगा. नाउ व्हाट इज द इंटरेस्ट चार्ज एंड एवरीथिंग दैट वी विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट स्लाइड. एक प्रैक्टिकल अगर एग्जांपल लूं, लेट्स से आईटीसी. तो आईटीसी का अगर लेट्स से रेट चल रहा था थोड़े टाइम पहले विच इज अ 486 रुपीज. ओके, अगर मेरे को 100 शेयर परचेज करने थे तो आई हैव टू कीप टोटल 48,000 बैलेंस. तो यही 100 शेयर परचेज करने के लिए मेरे को कंप्लीट बैलेंस रखना था विच इज 48,000. बट अगर यही ट्रेड अगर मैं एमटीएफ में लेता इन ए डिलीवरी, देन आई हैव टू कीप ओनली 13,600 रुपीज इन माई ट्रेडिंग लेजर. Another 35,000 will be funded by the HDFC security. So this is a one practical example. अगर मेरे को ITC शो शेयर बाय करना है which is roughly 48,000 का stock, for that I have to keep only 13,000 balance in my ledger. Okay, so in this the funding generally it's a 3 to 4 times. बराबर. तो this is basically on stock to stock how you can check the what is the margin. Okay, that it is also available on the mobile app also. I will show you how you can check the margin for a particular stock. Okay, now there are some key benefits for the MTF. तो जो भी आपने MTF में लेवरेज पोजीशन लिया ये 3 लाख का, that you can carry up to 275 working days. Okay, it's a 275 working days. Okay, so roughly there are 104 are the Saturday Sunday plus there are roughly 15 are holiday. If I add 120 days more, तो roughly 395 days का position create कर सकते हो into MTF, considering the Saturday Sundays and holiday. Okay. Second is you can buy quantity in a small portion or I can say a customized quantity you can purchase. So likewise in FNO there is a compulsory you have to purchase the lot. So let's say Reliance का lot size आज के दिन में 500 quantity का है. If you want to buy a Reliance in futures, then you have to purchase a compulsory 500 quantity. Okay, while in MTF you can decide your quantity. चाहे आपको 50 शेयर लेना है, 100 शेयर लेना है. You can average your position. Also you can leverage your position at the time of buying also at the time of selling also. तो जब भी आपको शेयर बेचना है वो भी आप अपना एवरेज आउट करके भी बेच सकते हो. Okay, so this is how you can amplify the profit. Then you can purchase the share via both cash and collateral. Collateral which means you can pledge your shares. तो आप MTF में जो भी पोजीशन क्रिएट करना चाहते हो, for that you can use either your cash balance or a pledge of your shares. Interest is charge is only 1%, which is very competitive in market. We are charging only 1% per month, which is अगर आपका 1 लाख रुपए का डेबिट है तो मंथली इंटरेस्ट इज ओनली 1,000 रुपीज. अगर मैं डे में कन्वर्ट करूं तो विच इज 0.0328, which means roughly 33 rupees of interest for on 1 lakh, which is charged to you. ओके, तो इन दिस केस लेट्स से अगर मैं 3 लाख का लेवरेज लेता हूं तो इंटरेस्ट इज ऑन टोटल 1 लाख मेरा था, 3 लाख का मेरे को फंडिंग मिला, मैंने टोटल 4 लाख का स्टॉक लिया, तो ऑन दैट आई हैव टू पे ओनली 100 रुपीज ऑफ इंटरेस्ट. ओके, वन मोर की बेनिफिट इज यू कैन कन्वर्ट योर शेयर इनटू द डिलीवरी वेन एवर यू वांट. लेट्स से आज आपने एमटीएफ में कोई भी पोजीशन लिया, आफ्टर 10 days 15 days नाउ द फंड इज अवेलेबल विथ यू. You can pay the fund into the ledger and you can mark your share to delivery. तो आपका MTF वाला पोजीशन डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगा and the interest charge will be stopped. Okay, so currently there are roughly 750 plus scripts are available into the MTF. You can check what is the funding percentage available from this link. Also, it's available on the mobile app also. Okay, now there are new things, there are new updates from for the MTF from the HDFC Sky side. Now we have started sending the communication regarding the research. So whatever our research recommendation, you get the customized with the tagging of the MTF pick. Okay, so you can start getting the notification, even the WhatsApp, even the emailers, even the SMS. So we are also, you can also explore our research page on the mobile app. Now let's start. अगर आपको MTF में start करना, how you can start? Okay, so for to start the MTF, first you have to require to enable the DDPI. Now what is this DDPI? DDPI is basically Demat, Debit and Pledge instruction. तो जब भी आप कोई भी shares बेचते हो, then broker need to deliver this shares to the exchange.
Okay, so for that, earlier there is a POA mechanism is there, which is a power of attorney. Okay, but in new system there is a DDPI mechanism is there. अगर आपका DDPI नहीं है, तो जब भी आप कोई भी शेयर्स बेचते हो डिलीवरी में, then you have to follow the TPIN process, which is EDIS process. आपको TPIN डालना पड़ता है, OTP डालना पड़ता है, then after you can sell your shares. But अगर आपका DDPI is enabled, then you can easily sell your shares. You no need to enter the OTP or TPIN every time. सेकेंड बेनिफिट, अगर आपका DDPA एक्टिवेट हो जाता है तो आप MTF में भी ट्रेड कर सकते हो. एंड द थर्ड बेनिफिट, यू कैन प्लेज योर शेयर्स. तो अगर आपके पास डीमैट में कोई भी होल्डिंग अवेलेबल है, द शेयर विच यू कैन प्लेज ऑन द प्लेज शेयर, यू कैन टेक द लिवरेज इनटू द आइदर MTF और इन द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. So these are the key benefits to if you are activating this DDPI. So these three are the key benefits. Secondly, we are not charge anything for the DDPI. So DDPI is completely free at the HDFC Securities. Now, how to activate the DDPI? तो अगर आप मोबाइल ऐप लॉग इन करोगे तो ऑन द मोबाइल ऐप पेज इटसेल्फ देयर इज ऑप्शन कॉल्ड अनलॉक द DDPI एनेबल नाउ. ओके, तो आपको इस तरह से ऑरेंज कलर का एक आइकन मिलेगा. यू हैव टू क्लिक, you have to authorize, you have to enter the Aadhaar number and the OTP. Your request will be taken and the DDPI will be activated within a 2 working days. So this is the process to activate the DDPI. Once the DDPI is activated, now let's see if I want to place the order. Okay, so how to place? So for placing the order, there are two things it's required, either a fund or I can pledge my share. If you want to add fund, then you have to click on the add fund from the profile section and you can add the fund. Second is I can pledge my shares. So earlier there is we are discussing the collateral or pledge. So how I can pledge my share. So I have to click on this section. This option showing this is a eligible margin against the holding. तो आपके पास डीमेट में जो भी होल्डिंग पड़ा हुआ है, इसके सामने आपको कितना मार्जिन मिल सकता है. तो इन दिस केस देयर आर 1785 is a eligible margin against your holding. I have to click on the pledge. These are the list of stocks which are available in my Demat account. I can select, deselect, or even I can modify the quantity also, and I have to do the continue the pledge. Once I click, I will be landed on the CDSL pledge and I have to enter the OTP and the submit. Once this process is done, within a 10 to 15 minutes, you will get the margin against your holding. Now this thing which you can utilize for either for your MTF trades, even for your futures and options trades, but as discussed in our first side. Now how to place the order. Okay, so आपने let's say अभी आपने watch list पे there are different scripts are available. Let's say if I want to buy the TCS, I will click on TCS. On this mini quotes page also there is options available, so whether your stock is available for MTF or not, from where you can also check. Yes, so this TCS is available. Okay, TCS price is let's say 3934, roughly 4000 tha, which I will get at 1100 rupees. Okay, so agar once I click on buy, so this is the our order pad. In order pad there are three options. One is the intraday, delivery, and third is the MTF. तो अगर मैं यही शो शेयर डिलीवरी में लेता हूं तो आई हैव टू पे फुल फंड. तो आप बॉटम ऑफ द पेज यू कैन चेक, यू हैव टू पे एंटायर 3,93,000 फॉर टू बाय द 100 TCS. बट अगर यही शेयर मेरे को MTF में लेना है, द सेम 100 शेयर, ओके, तो फॉर दैट आई हैव टू पे ओनली 1,10,000. Okay, so in this option you have to select whether you want to purchase a share into the delivery or whether you want to purchase the share into the MTF. Once you click on the buy, मैंने buy किया, you can check this is the MTF and yes, after executing trade, your order will be done. Once your order will be done, so earlier we have to pledge the shares for the MTF. तो जब भी आप order करते थे, then after you have to pledge this share. Yani you have to mark this share, this is my MTF transaction. But now the system is now it will be now the auto pledge. Okay, after the 24th of February, you no need required to pledge. The shares will be automatically pledged by the exchange. Okay, so earlier we have to do every time as and when if you are buying any trade, जब भी हम कोई भी नया ट्रेड लेते थे हमको प्लेज करना पड़ता था. आफ्टर 24th of February प्लेज करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इट विल बी ऑटोमेटिकली प्लेज. आपको सिर्फ प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है MTF एंड योर यस ऑर्डर विल बी मार्क्ड एज अ MTF ऑर्डर.
Now how I can convert the position. Let's say आपने MTF में कोई भी trade कर दिया. Okay, so this is your portfolio page. On portfolio, there are two kind of holding. One is a holding and second is a MTF. Okay, so this is my MTF holding. On MTF holding, I can check what is my you paid, which is मैंने कितना पे किया है, what is HDFC Sky funded and what is my current invested value. Okay, so this is how I can check on this amount. तो मेरे को interest charge होगा. Now, let's say the fund is available with me after 10 days, 15 days, and I want to convert the share into delivery. So let's say मेरे को CDSL करना है, convert to delivery. I have to click on the CDSL. I have to select the convert to delivery option. Once I click, I have to enter the quantity and I have to submit. Then my position will be converted from MTF to delivery. Okay, तो next day ये जो आपको MTF में शेयर दिख रहा है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा into the holding section, which is now this is your paid stock and the interest will be not charged on this. तो मैंने आपको दिखाया how you can pledge also and how you can convert your share from MTF to delivery also. Now these are the new key updates from the HDFC. Okay, so now the on the profile section you have to click on the MTF pay later option. So there is an entire dashboard for the MTF from where you can check the list of eligible securities, a video, what are the key updates, and even the research also. Once I click on the list of eligible securities, from where you can type the security and you can check how much funding is available on particular this script. This is MTF entire position page is revamped, जहां से आप चेक कर सकते हो आपने कितना पैसा दिया, कितना आपको फंडिंग मिला and all that. Now earlier we are sending the communication regarding the MTF pledge, but yes, after 24th of February it's not required. Now this is a one more key updates regarding the research page. So on the bottom of page there is a where to invest section is now available. You have to click on the where to invest, then entire research section is available जहां से आप morning report, evening report you can download and you can read this report. What are your next purchases, what are the segmented call, which is कितने calls available है for the long term, short term, कितने calls available है for the MTF, even the future option that you can check and you can take your decision based on the research from the HDFC Securities. Now let's understand what are the charges and the reports, how to check the reports for the MTF. Okay, now first I will discuss about the charges. The charges is 20 rupees per order for all kind of orders, which is whether equity, future options, commodities or currencies. Okay, the HDFC Sky में there is a charges is flat, which is a 20 rupees per order. All the ETFs, okay, so which is exchange traded fund. Earlier we are charging a 20 rupees per order, but now it's also free. So there is no charges on the ETF. Also, you will get the MTF on some of the ETFs like Bank Bs and Nifty Bs. So you can also take the position into the MTF also for the ETF where the brokerage is zero, and you will get the MTF. Second is buy stock pay later, which is a 12%. ओके, तो जो भी एमटीएफ में इंटरेस्ट रेट है विच इज अ 12% पर annum. अगर मैं मंथली बेसिस पे बात करूं तो इट्स 1%. ऑन 1 लाख देयर इज अ 1000 इंटरेस्ट इज देयर. सेकंड इज एमटीएफ प्लेज चार्जेस. तो जब भी आप एमटीएफ में परचेज करते हो तो योर शेयर विल बी मार्क एज अ एमटीएफ. फॉर दैट देयर इज अ 20 रुपीज पर ऑर्डर. सेकंड इज अ डीमेट ट्रांजेक्शन चार्जेस. तो जब भी आप कोई भी सिक्योरिटीज बेचते हो फॉर दैट आपका सिक्योरिटी एक्शन को डिलीवर करना पड़ता है. फॉर दैट विच इज अ डीमेट ट्रांजेक्शन चार्जेस विच इज ऑल्सो 20 रुपीज. एंड थर्ड थिंग इज अ प्लेज चार्जेस एंड अनप्लेज चार्जेस. तो जो भी आपका होल्डिंग है, अगर आप होल्डिंग के सामने लेवरेज देना चाहते हो, ओके, तो फॉर दैट यू हैव टू मार्क द शेयर्स एज फॉर द प्लेज. फॉर दैट द 20 rupees per script is a charge. So these are the charges from the HDFC Sky side. Now let's understand the reports. So on the this profile section, there is a fund detail ka option is there. In fund detail, there are two kind of fund details. One is your fund detail and second is the MTF fund detail. So let me explain.
how you can check. Now this fund detail is the basically cash and FNO वाला section is there, जहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आज के दिन में आपको कितना मार्जिन अवेलेबल है टू market trade into the cash segment or even the futures and option segment. So for this 17,000 margin is available for my cash segment, या फ्यूचर्स में अगर मैं पोजीशन लेना चाहता हूं तो 17,000 का मार्जिन इज अवेलेबल. अगर मैं एमटीएफ में ऑर्डर करना चाहता हूं तो देन 2,700 का मार्जिन इज अवेलेबल. बट द कैश फंड कैन बी यूटिलाइज फॉर द एमटीएफ. तो 17 प्लस 2 विच इज रफली 19,000 का मार्जिन इज अवेलेबल फॉर माई एमटीएफ ट्रेड. तो अगर मेरे को कैश में या फ्यूचर में ट्रेड करना है तो मेरे पास 17,000 का मार्जिन है, बट एमटीएफ में ट्रेड करना है तो 2,700 प्लस 17,000 विच इज रफली 19-20,000 का मार्जिन इज अवेलेबल. एमटीएफ ओपनिंग बैलेंस का मीनिंग होता है विच इज वॉट एवर द फंड अवेलेबल इन योर एमटीएफ लेजर. ओके, तो आपका एमटीएफ में टोटल कितना कैश बैलेंस पड़ा हुआ है. एमटीएफ विड्रॉल लिमिट विच मीन्स आप कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हो फ्रॉम योर एमटीएफ लेजर. एमटीएफ मार्जिन ब्लॉक यानी आपने जितना भी एमटीएफ में पोजीशन लिया हुआ है इसके लिए कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है. ओके, देन कन्वर्ट टू डिलीवरी यानी अगर आज के दिन में कोई भी शेयर आप कन्वर्ट टू डिलीवरी मार्क करते हो देन हाउ मच द फंड इज रिक्वायर्ड एंड सॉरी कन्वर्ट टू डिलीवरी विच मीन्स अगर आप कोई भी शेयर आज कन्वर्ट टू डिलीवरी करते हो देन कितना अमाउंट ब्लॉक हुआ फॉर दिस कन्वर्ट टू डिलीवरी. देन एमटीएफ यूज प्लेज बेनिफिट विच मीन्स जो भी शेयर्स आपके प्लेज किए हुए हैं फ्रॉम योर डीमेट. ओके, इसके सामने आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है. तो अगर लेट से मैंने 1 लाख का शेयर प्लेज किया हुआ है इसके सामने लेट से मेरे को 80,000 का प्लेज बेनिफिट मिल रहा है तो दिस अमाउंट इज अवेलेबल ओवर ईयर. ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन रीड योर एमटीएफ लेजर. Second thing on the back office side, back office section, there are two reports are available. One is a MTF interest rate, which means अगर आपको चेक करना है कि मेरे को डे वाइज या स्क्रिप्ट वाइज कितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो फ्रॉम हियर यू कैन डाउनलोड द रिपोर्ट फॉर द एमटीएफ interest rate report. And second most important is MTF position summary. Okay, so if you click on the MTF position summary, you have to select the last date. Yani let's say the today is the 6th of March, so you have to select the 5th March. Okay, from where you can check आपके अकाउंट में कितना कैश पड़ा हुआ है इन MTF, कितना शेयर्स आपका अवेलेबल है. तो जो भी आपने शेयर्स डीमेट से प्लेज किया हुआ था टू टेक द पोजीशन इनटू एमटीएफ तो इसमें आपका कितना यूटिलाइज. तो दिस इज टोटल अवेलेबल मार्जिन इनटू द एमटीएफ. अगेंस्ट दैट एप्लीकेबल मार्जिन यानी आपका एमटीएफ में जो भी पोजीशन अभी करंट आपने लिया हुआ है इसके लिए कितना मार्जिन ब्लॉक हुआ हो रहा है. एंड व्हाट इज योर एमटीएफ टोटल लॉस बिल यानी आपका एमटीएफ में पोजीशन में कितना टोटल अभी लॉस है. एंड फ्रॉम हियर यू कैन चेक व्हाट इज योर शॉर्टफॉल. तो अगर इधर माइनस अमाउंट आ रहा है विच मीन्स दैट मच अमाउंट यू हैव टू पे. ओके, अगर आपके अकाउंट में मार्जिन शॉर्टफॉल होगा इन मॉर्निंग यू विल गेट द एसएमएस रिगार्डिंग द मार्जिन शॉर्टफॉल. Okay, roughly around the 9 to 9:50 and that you have to pay, otherwise your position will be square up. तो let's say अगर मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए का मार्जिन शॉर्टफॉल आया तो रफली 30,000 तक का स्टॉक स्क्वायर अप होगा. To avoid this square up you have to transfer the fund okay before 10:30 so your position will be not be liquidated. ओके, तो आपको चेक करना है इन मॉर्निंग ऑल्सो बराबर. तो आफ्टर 8:30 यू कैन चेक दिस रिपोर्ट ऑन द बैक ऑफिस सेक्शन. देयर इज एमटीएफ पोजीशन समरी फ्रॉम वेयर यू हैव टू सिलेक्ट द लास्ट वर्किंग डे एंड फ्रॉम वेयर यू कैन चेक व्हाट इज द शॉर्टफॉल. So this is how you can check the MTF positions. So yes, this is done from my side. If you have any question, you can share over the chat bot or on the Q&A panel. I will happy to answer all your queries. Yes, Sharmila. You are on mute. Oh, I'm so sorry about that. Nirmit, thank you for the wonderful session. I would just like here to show you again one of the, where you will get all the research recommendations, the page where, today's open calls are visible. So, Nirmit, is that possible for you?
so that the Yes, yes. clients are very well aware that in case if they need to know any recommendations from our research department, they can go ahead and see that particular page and then place the order from there directly. Yes. Because So we this is in MTF we have about 4 to 5 open calls today as on date. okay. So basically on the mobile app, there is in bottom of the section, there is a sky symbol is there where it's mentioned where to invest. You have to click on this panel and these are the live calls. Okay. So suppose if I click on the MTF, so there are three kind of segmentation. One is a long-term MTF call, mid-term MTF call, and the short-term MTF call. Okay. So for the midterm, there is a CPSE ETF ka call is available. If I click on that, then what is my buy range, target price, and the stop loss price, and the last traded price it's mentioned. Okay. And on the bottom of the page, you can check अगर मेरे को stock buy करना है into delivery, then I have to pay 80 rupees. The same stock if I want to buy into the MTF, I have to pay only 28 rupees. Okay, so this is the midterm call for the CPSE ETF, and for the short term, there is a ICICI Lombard ka call is available. Then Varacco Engineering is available. Godrej Properties, Gujarat Industrial Power Corporation, Timken, and the GSW Steels. So these are the live calls currently available. You can check the what is the target, stop loss, and the rationale behind that. Even the entire detailed report is also attached over there. On the why buy this, so there is a short-term MTF, and if you click on the detail, then you can explore entire detail why this stock is recommended for the MTF. So from where you can check for the MTF calls in the same way, if you are a trader into the FNO, you can check your futures and options call. And if you want the long-term, short-term, mid-term calls, then this section is also available from where you can check what is the view of the long-term, short-term or mid-term calls, even the intraday calls on the HDFC security. So this section is entire newly designed and newly launched. You can explore this page from the mobile app. In the bottom of the section, there is a where to invest section is there. Uh, Thank you, Nirmit. That was really wonderful. Okay, so we have a question here. MTF loss bill, does it include the interest amount also? So this is the question. Nirmit, you will take it or I'll take it? Yes. So MTF, एक second, MTF loss bill includes interest amount also. No, तो loss is basically तो on the जैसे मैंने आपको सेक्शन दिखाया, there is a MTF PNL. So this is a basically loss, and MTF interest will be posted in your ledger on the daily basis. तो आप डेली का लेजर देखते हो तो इंटरेस्ट इज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम दैट. ओके, तो लेट्स से अगर मेरा 1 लाख रुपए का डेबिट है तो मेरे को लेट्स से 33 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है, तो दिस 33 का इंटरेस्ट पोस्टेड ऑन एवरीडे इवनिंग. Can we Uh, have a recording of the session available to view it offline? Yes, it's available on the YouTube. You can subscribe the HDFC Sky channel from the YouTube, and where you can find this webinar recording also. yes. There is one more question, Nirmit. MTF interest rate report has only send email option and no view option. I have pressed send email, but still the report is not sent even after 30 minutes. Is there any issue? As Nageshwar sir, as there is a no issue, but if you still not get the report, then you can just share your code, yeah, even your register mobile number over here. Our customer service team will be get in touch with you and provide the reports by today only. Yeah. So anytime you feel that you have not got the reports, you can write into our customer care. Nirmit, you want to give the customer care email ID and the telephone numbers so that people will make a note of it. And as and when they need anything, they can call up the customer care number or they can write into our customer care. Sure, sure. I will update in the chat bot. Customer care number is 1800 121 2109.
Let me So share this is with a all. toll-free number where y'all can call up 1-800-121-2109, or you can write in also. Support at hdfcsky.com. Yeah, so you can also write in an email to skysupport@hdfcsky.com. So in case if you do not get the report, please do share this on your email, on the email, including your details, and we will be sending the reports to you on your registered email ID. So please ensure that your registered email IDs are updated, so that whenever you are demanding anything, or you are requesting anything, it is generally answered on the registered email ID. Any more questions? We'll take up some questions here. Yes, hi. So you have a question? So please write in your, please put in your question in the chat box. Mr. Rukam, can you please type in your question into the chat box? Hi, Rukam. Good morning. We waiting for you to put in your query, sir. Share market का gross available है जी, so I haven't really understood the question. Can you please elaborate what is it? Nirmit, can you read the question on the chat box? I'm not really trying to get what Mr. Rukam is asking. Not get it. रुकम जी, आइडली अगर आप थोड़ा इलैबोरेट करेंगे आपकी क्वेरी, तो समझ में आएगा। ये आपने जो लिखा है समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी क्वेरी क्या है। अ, निर् ओके, शेयर मार्केटिंग कोर्स। अच्छा, सो वी डोंट हैव, सर हमारे पास शेयर मार्केटिंग की कोई ऐसी कोर्स नहीं है, बट वी डू ऑफर अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग सेशंस। तो आपकी कौन सी एक स्पेसिफिक कोर्स की बात कर रहे हैं, जैसे फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, या नॉर्मल इक्विटी है? आप कौन से कोर्स की बात कर रहे हो सर?
Rukamji, you can also explore our HDFC Sky website where there is a HDFC Sky Learn section is available. You can explore all the courses. So if you are a beginner, if you are experienced, so you can explore the course as per your profiling, and you can get all the details. Can you please provide a view option also for MTF interest so that we can view it on the app itself? You may check with your technical team if this can be provided. Thanks. Sure, Mr. Nageshwarji, we will definitely take this feedback and we will share that, we'll try and improve that from our end, sir. Thank you so much for the feedback. Okay. So Nirmit, it was a wonderful session. Thank you for the session. I hope people here on this particular call would have really enjoyed going through our HDFC Sky app, and they would have had now a fair knowledge about MTF. We did have a call where we were talking about the markets and what is the next course for MTF. I hope you all had attended this. We will keep having these sessions. So as and when there are any upsides in the market that is predicted, we will come up with our short term, long term, and mid term MTF recommendations. I would request all of you all to go through our recommendation section. We just saw that on the app, and that will help you build a portfolio, that will help you get some profits. But do understand this is market, so please, whenever you are trading, please ensure to have your stop losses in place. And thank you so much for attending this webinar. It was great having you all here on this session, and you all have a wonderful day. Thank you. Thank you.